agriculture and rural development. Rupantar is working in collaboration with 31 states and Union Territories of India and transforming education in a big way. So let me introduce the panel today. Dr. Anjalee Agarwal, member, SCO, and she's executive founder, director, Samarthayam. Dr. Archana Singh, head, corporate priority, founder, skill development corporation, Samarthayam. Dr. Homiyar Mobedji, disability expert, corporate priority, pioneer in digital skill development corporation. Dr. Simmi Mahajan, disability expert, corporate priority, pioneer in digital assistive corporation. Dr. Simmi Mahajan, let me start. Expert, pioneer in digital. So let me start with Anjalee. Dr. Simmi Mahajan, let me start. Expert, pioneer in digital. So let me start with Anjalee. Dr. Simmi Mahajan, let me start with Anjalee. Anjalee is a pioneer working in the field of accessibility, education, training. Let me start with Anjalee. Is a Anjalee working in the field. There are several sectors in education and has won many laurels nationally and internationally. Dr. Anjalee working in the field. There are several sectors in education and has won many laurels. Dr. Anjalee and internationally is a member of Aayog, several sectors in education and has won many laurels. Dr. Anjalee is a member of Aayog India. Task force women say Aayog she's also a member of the task force. Women say let me welcome she's also a member of the task force. Let me leave the family So now I invite Anjalee to please speak. Hello Anjalee ji, welcome. Thank you, Sunita. Thank you so much to the Project Inclusion for having this wonderful webinar today on the day that we celebrate with pride, the International Day of Persons with Disabilities. And today I'm going to talk about accessibility. Will I be able to share my screen, please? Yes. So as Sunita ji has already spoke about what Samarthayam does, my organization, we started almost 29 years back. Accessibility has seen change of mindset, awareness, and also the implementation that work we see these days. So I'm going to just share a couple of slides on what accessibility means to all of us and how we could make it possible to see that the accessibility is taken as a matter of right and not as a matter of luxury, and also that accessibility is for everyone, not only for people with disabilities. So to begin with, we know that there are people who have difficulty in moving around, seeing, remembering, self-care, hearing, and 1 out of 7 persons would actually undergo these kind of challenges in lifetime. So it could be just not that people who have got acquired disabilities, it could be also because of the age, it could be also because of many other factors like medical issues, it could be because of the nutrition, it could be also because of the climate. So the Rights of Persons with Disability Act in 2016 in India
has identified 21 types of disabilities, but whatever is being done to ensure accessibility in the built environment or the physical environment is not only meant for, as I said, for people with disabilities, but also for others. So many times it's just taken for granted that there are certain things if we do, which is a myth. So if we provide, accessible environment, that it could be a very, very expensive issue and there will be a lot of funding required. But we have studies from international sources and within India as well that actually gives and highlight this information that refurbishment can cost 1 to 2% of the total. It gives and highlight this information that refurbishment can cost 1 to 2% of the total. So not as a matter of, as I said, for people with disabilities, but that refurbishment. So is that we have to have accessibility throughout the sites, the infrastructure, the buildings that we are going, but it has to begin from outside. So it's about accessing the building, using the facilities in the building, and also coming out with ease and safety if there is an emergency or if there's any kind of a disaster. Now, when we're talking about accessibility, the opportunities are abundant and we also have endless possibilities. So here are some pictures which I'm highlighting to show that each and everything needs to be accessible, whether they're schools, colleges, hospitals, tourism sites, whether they are bus stops, whether they are railway stations, even museums. Why not? Because people with disabilities have the right to go to the museums and tourism sites. And it opened up opportunities for being included in the mainstream societies, for employment, for being economically rehabilitated, empowered, many opportunities. So we look at universal design, the change that has happened from the past to present, and now we are moving on to the future. That universal design is a design that opens up more avenues for independence, and also it enhances quality of life, and it benefits the transgenerational population from the child to a senior citizen, and it makes a built environment more user-friendly. So it benefits everyone beyond age, gender, and disability. And when we look at this pictogram, we understand that everybody will undergo any kind of an issue throughout the lifetime, maybe because of temporary ailments, or maybe because of any of the natural calamities, or through the stages of having a child at a home. So what we need to do is to see that the life cycle of accessibility from inception to strategy planning, designing, procurement of material, implementation with the correct accessibility standards, and then the monitoring and enforcement, including the people with disabilities as access auditors, goes into the peer review and see that each and everything becomes safe, accessible, reliable, and affordable. So these are 4 terms that we use for each kind of examples that we are putting up in tourism sites, built and transport ecosystem, public buildings, including spaces. So how do we go about making things safe? Starting from the pedestrian infrastructure, the road infrastructure, crossings, the traffic calming, efficient street lighting, and also having the police vigilance and emergency vehicles in case of a disaster. Safety is also about being independent and doing things on their own. So signages helps in a big way. Auditory signals are important for people with visual impairment to cross roads on their own. Accessibility is linked with safety, and accessibility in the pedestrian environment, in the on the roads, or even in navigation. When we require tactile pavers for people with visual impairment, everything becomes important. I'm giving some examples which we started with the Central Public Works Department, and these are very high-profile buildings like the Nirman Bhavan.
and the Prime Minister office, which many people think that the Prime Minister office is a heritage building and you can't make it accessible. So I'm showing the gate number 5A from where all the ministers and the PM himself, they take this route, and this route has been made accessible. A long time back, 2010, this is a picture we have taken. And then the reliability factor is all about having a consistency in the journey that people take, starting from origin to destination. That is a complete trip chain from home to wherever they are going. So these are some of the pictures of the metro stations and how metro has actually changed the mindset that it is possible to provide accessibility for people with all kinds of disabilities, including the bus rapid transit system, the BRT system, which is all over there in the country now. And it is one of the another important and cost-effective mode of transportation, public transportation, that enables people with disabilities to board the bus systems. Within the buses, there are also certain things required, such as the safety areas and also the demarcated space for wheelchairs, including other facilities and amenities such as the public toilets, benches, dustbins, street furniture. Everything comes into the accessibility reliability factor, because even if one thing is missing, then it deters people with disabilities to come out of their homes. Yeah. So moving on, yeah, very quickly, just last 3 slides. Affordability is about not just about economics, but time, effort, and convenience. And then I'm showing you some examples of economics, but time, effort, and convenience. And then I'm sure it deters people with disabilities to come out of their homes. Yeah. So moving on, yeah, very quickly, just last 3 slides. Affordability is about not just about economics, benches, dustbins, street furniture. Everything comes into the accessibility reliability factor, because even if one thing is missing, then it deters people with disabilities to come out of their homes. Yeah. So moving on, yeah, very quickly, just last 3 slides. So we don't have the money to break and make the things. So let's do it now, not yesterday or tomorrow, but today itself. Thank you so much for this opportunity, and I look forward to being connected for the question answers. Thank you. Yes, thank you, Anjalee ji. Excellent. You know, you in such a short span, you mentioned so many things, the wonderful work that you are doing, and I'm always appreciable for your immense courage and the effort that you put in. So coming back to the question, the first question that I would like to ask you is about India Accessible campaign. What is it about, and isko Hindi mein kya kehte hain, accessibility ko? So this is basically Accessible India campaign is Sugamya Bharat Abhiyan, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा फ्लैगशिप कैंपेन है, जिसमें बहुत सारे टारगेट्स और इंडिकेटर्स हैं और टाइमलाइंस हैं कि हम किस तरीके से पूरे भारत को सुगम्य बना सकते हैं. बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि एज इट इज हमारी बहुत डाइवर्सिटी है, जोग्राफिकली है, पुराने नई बिल्डिंग्स हैं और बहुत फैलावट भी है. बट ये एक चैलेंज के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम पूरे भारत को सुगम्य बनाए. और इसमें 2015 का एक डेडलाइन था जो कि 2022 में खत्म हुआ, और अगेन 5 इयर्स का इसमें एक एक्सटेंशन है ना. एंड वी आर होपफुल कि सुगम्य भारत अभियान में फिजिकल एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एनवायरनमेंट और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम तीनों का समागम है, जिससे कि पूरी तरह से हम भारत को सुगम्य बना सकें. बस एक्सेलेंट. यही सुनना था कि सुगमता होना अनिवार्य है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में हो. आज तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग हमने टच किया है. एक्सेसिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़े एक विषय है, जिसके लिए किसी और दिन आपका जरूर हम लोग और इनपुट लेंगे. एंड थैंक यू वेरी मच अंजलि जी for sharing such informative insights regarding accessibility or transportation beyond, your work speaks for itself. The responsibility that you and your organization has taken up is humongous, gigantic. And we can see the changes that you are, bringing in the society and the mindset in general. I'm extremely happy to have you with us today, and thanking you once again for your
for giving your consent to be a part of this webinar, live event. Thank you, Anjalee ji. Thank you so much. So moving on to the next panelist, may I welcome Dr. Archana Singh. Dr. Archana Singh. Good morning, Sunita ma'am, and good morning to all the viewers, panelists, and everyone who is watching. Thank you so much for this very encouraging, insightful event. And thank you, Dr. Anjalee, for making Delhi Heart accessible. Very recently, I had taken my aunt to Delhi Heart. She hadn't stepped out of a house for a long time because of non-accessible places, and she wanted to shop, and with a wheelchair we navigated very, very well. So thank you. I didn't know that you spearheaded this entire accessibility campaign in Delhi Heart. So thank you, Dr. Anjalee. Yes, Sunita ma'am, over to you. Yes, let me introduce Dr. Archana. Archana is the head corporate priority National Skill Development Corporation, and she has been giving her valuable time in the field of education, health, and for the last 20 years. And Archana, I would like you to speak on the accessibility, the employability part of it. You know, when we talk of employability, it is more to do with the skills, the Skill India. So what is NSDC doing in the field of employability? Thank you, Sunita ma'am. So I don't have a PPT because I wanted to share through a conversation everything that NSDC and Ministry of Skill Development is doing in this space. तो हमें सबको पता है कि अभी जो है jobs की बड़ी crisis हो रही है, and more so for people with disability. But that aside, I'm going to take you through the framework of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship or NSDC, और आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम सबका प्रयास है कि jobs जो है for everyone, youth and including people with disability, industry दिलवाए, और कैसे हम industry को encourage करते हैं, industry को हमारे साथ जोड़ने के लिए उनसे उनके network में रहते हैं, etc. etc. So National Skill Development Corporation जो है वो Ministry of Skill Development का implementing arm है, और जितनी भी पॉलिसी होती है नेशनल लेवल पे स्किल्स स्पेस में, वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंप्लीमेंट करती है. इसके अंडर करीब 36 सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं. तो सेक्टर स्किल काउंसिल्स क्या होते हैं? हर सेक्टर में एक इंडस्ट्री बॉडी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल हो गया, फर्नीचर एंड फिटिंग सेक्टर स्किल काउंसिल हो गया, अपैरल सेक्टर स्किल काउंसिल हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ऐसे हर सेक्टर के लिए एक सेक्टर स्किल काउंसिल है, और 2015 में पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए भी एक सेक्टर स्किल काउंसिल स्थापित करी गई है. और ये जो सेक्टर स्किल काउंसिल है, इट कट्स हॉरिजॉन्टली अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपैरल, आई एम अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और मुझे अपैरल सेक्टर स्किल काउंसिल के थ्रू अपैरल इंडस्ट्री में जॉब मिलने की संभावना है, then I can approach the apparel sector skill council, apparel industry, and get a job. Similarly, furniture sector skill council, tourism and hospitality sector skill council, etc. etc. तो हमारा ये जो persons with disability का जो sector skill council है, that cuts horizontally across different sector skill councils. अब ये क्या काम करती है? इसका काम है कि जो जॉब रोल्स इन 36 सेक्टर स्किल काउंसिल्स में डिसेबिलिटी फ्रेंडली हैं, उनको वो अडॉप्ट करें, और उनके लिए एक टूल किट या एक्सपोजिटरी बनाएं, जिससे कि जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए, वो अडेप्ट किया जा सके. तो आज के टाइम पे अगर आप स्किल काउंसिल फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी के वेबसाइट पे जाएं, तो आपको सारा डेटा वहां दिखाई देगा, और डेटा कहता है कि इनके पास करीब 223 ऐसे जॉब रोल्स हैं अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर स्किल काउंसिल्स जो डिसेबिलिटी फ्रेंडली है, जिसका मतलब है कि पीपल विद डिसेबिलिटी कैन गेट ट्रेनिंग इन दीज जॉब रोल्स एंड बी प्रोवाइडेड जॉब्स. और आज की तारीख में जॉब काउंट क्या है पीपल विद डिसेबिलिटी की थ्रू दिस सेक्टर स्किल काउंसिल? करीब 16,000 के करीब.
इनके प्लेसमेंट्स हुई है थ्रू द सेक्टर स्किल काउंसिल्स। और मेथोडोलॉजी जो है इस ट्रेनिंग के लिए, कितनी जॉब रोल्स के मेथोडोलॉजी को डिसेबिलिटी फ्रेंडली बनाया गया है, एंड कौन से डिसेबिलिटी के लिए फ्रेंडली बनाया गया है, तो वो है 6। वो कौन से डिसेबिलिटीज हैं? वो डिसेबिलिटीज है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट, लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ऑटिज्म। और ये जो मेथोडोलॉजी है ट्रेनिंग के लिए, जिसके लिए ये जो फ्रेमवर्क बनाया गया है टू हेल्प पीपल इन ट्रेनिंग पीपल विद डिसेबिलिटी, उस फ्रेमवर्क का नाम है एक्सपोजिटरी। तो ये जो टूल किट है जिसके माध्यम से पीपल विद डिसेबिलिटी को डिफरेंट जॉब रोल्स में ट्रेनिंग दी जाती है, उस टूल किट को एक्सपोजिटरी कहते हैं। तो अगर आप स्किल काउंसिल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के वेबसाइट पे जाएंगे और ट्रेनिंग रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे, ट्रेनिंग रिसोर्सेज में आपको एक्सपोजिटरी मिलेगी, और ये 6 एक्सपोजिटरीज जो हैं वो पीडीएफ के तौर पे आपको वहां पर दिखाई देगी। आई विल टेक अ पॉज हियर, सुनीता मैम। So yes, Archana, thank you for explaining in brief. I'll still say brief because it's more to share. So sharing in brief the work, the system, the how NSDC works, and the role of NSDC in the life of people with disabilities, and how it is empowering the skill in skill development. So now coming back to the question. How accessible are these platforms for job placements for persons with disabilities? Can you elaborate on, share in brief about that? नीता मैम, तो हमारे यहाँ एक हर ट्रेनिंग सेंटर को एक स्मार्ट पोर्टल से गुजरना पड़ता है, और ये जो स्मार्ट पोर्टल है वो इंफ्रास्ट्रक्चर चेकिंग करती है। So suppose your foundation wants to become a training center, ठीक है? तो हर ट्रेनिंग सेंटर की एक चेकलिस्ट होती है कि आपके पास इतने ट्रेनिंग लैब्स होने चाहिए, इतने वॉशरूम्स होने चाहिए, इतना लैब होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन एनएसडीसी in 2016 included an accessibility part also in the smart portal कि हर ट्रेनिंग सेंटर को एक्सेसिबल भी होना पड़ेगा फॉर द ट्रेनिंग ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। और वो जो चेक पॉइंट है वो इनको क्रॉस करना ही होगा ट्रेनिंग सेंटर को टू बिकम अ ट्रेनिंग एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर विद एनएसडीसी। तो ऐसा नहीं है कि इस सेक्टर में काम नहीं हो रहा है एज फार एज एनएसडीसी इज कंसर्न, ट्रेनिंग इज कंसर्न एंड एम्प्लॉयबिलिटी इज कंसर्न। हमारे यहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस इन द फ्रेमवर्क हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड टू इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। ये हमने एक स्ट्रक्चर में बता दिया। Second thing जो हम करते हैं, when we reach out to industry partners, they source workforce from NSDC in different sectors. So there is Nestle, which is sourcing workforce. Then there is the Munjal, the Hero Cycles, who sourcing workforce. ऐसे करके बहुत सारे industry partners जो हैं वो workforce source करते हैं NSDC से। तो हम उनको पहले तो सेंसिटाइजेशन देते हैं इंडस्ट्री पार्टनर्स को कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के जो स्ट्रेंथ्स हैं और जो टैलेंट हैं उनको वो रिकग्नाइज करें, एंड टू गो अ स्टेप फर्दर टू से कि आप प्लीज क्या 30% अपने वर्कफोर्स में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को आपके जॉब फ्रेंडली रोल्स में क्या ले सकते हैं। और अगर उनके even if there is resistance from their side, we try our best to sensitize them, and in some cases, especially in our CSR projects, हम तो mandatory बना दिए हैं उसको कि भाई आपको। जी सुनीता मैम, एक और क्वेश्चन था अर्चना की, क्या ये जो लिस्टेड जॉब्स हैं ये क्या रेडिली अवेलेबल हैं साइट्स पर, कि जैसे जो हमारे पेरेंट्स और जो हमारे टीचर्स जुड़े हुए हैं एज व्यूअर्स, उनको जानने की जरूरत है कि ये कहाँ पर ये सारी जॉब लिस्टेड है फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, कि एक्सेसिबल हो, मतलब आर देयर एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म साइट्स? Absolutely, ma'am. If whoever is handling your platform can share the screen of Skill Council for Persons with Disability, or people who are watching, if you just navigate onto the website Skill Council for Persons with Disability, scpwd.in, उसमें आपको एक टैब मिलेगा नौकरी। ओके। तो उस टैब में सारे नौकरी जो हैं वो लिस्टेड होते हैं।
for people with disability. आप वहां से navigate कर सकते हैं and you can get connected. So it's a demand and supply platform जहां पर jobs are listed and people can come and look at what jobs will match their preference and skill sets. Excellent. So yes, thank you, Archana, for giving us a brief on NSDC and the skill development platform. और कौन सी jobs available हैं? Because I always believe कि skilled India है तो जो PWDs अगर skilled हैं तो they are extremely, this is extremely essential, and they can be job providers, not only job seekers. So thank you, Archana, for today's session. Thank you, Sunita ma'am. And let me take a moment to thank you and take this opportunity in this August audience to thank you for allowing me to start my journey in disability in a formal way. Sunita ma'am, if you remember, you were the one who encouraged me to do the course in learning disability back in, I think, 2006. And you've been a mentor and guide throughout. I've learned so much from you and continue to do so. And Sunita ma'am, continue the good work. Kudos to you. Thank you very much. Thank you very much. But this is the day to, to encourage and appreciate the work of everyone. Thank you, Archana. Thank you very much for giving your consent for the live webinar today. Now let me, so after completing 2 very important sessions on infrastructure and employability, let me switch on to a very, very important aspect of assistive technology. Assistive technology is all about assisting the persons with disabilities in education, making their life easy, providing e-assistance, etc. Let me invite Dr. Homiyar Mobedji, who is a pioneer in the field of digital accessibility technology, and who is also pioneer in creating a software Bookshare. Welcome, Dr. Homiyar Wadia. Homiyar ji. Welcome, sir. Welcome. Welcome, Dr. Homiyar Mobedji, who is a pioneer in the field of disability. Yes. Can you hear me now? Yes, Sunita absolutely. Ji. Absolutely. Welcome. Thank you so much. And we would like you to share your experiences about Bookshare and the e-digital platform that you have created. Thank you. Will do. So thank you for inviting us, and welcome to all our friends who have joined us today. मैं जहां से शुरू करूंगा जहां अर्चना जी ने खत्म किया। उन्होंने बात की कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, और मेरा जो फोटे है, मेरी स्पेशलाइजेशन है, वो विजुअल इंपेयर्ड के साथ है। तो मैं खास करके विजुअल इंपेयर्ड के बारे में और खास करके एम्प्लॉयमेंट से शुरू करूंगा। सो एज वी अंडरस्टैंड कि पर्सन्स विद विजुअल इंपेयरमेंट जब वर्कफोर्स में काम करना चाहेंगे तो उनके लिए वो सारे अवसर तो नहीं खुल सकते हैं जो एक नॉन डिसेबल्ड के लिए खुल सकते हैं। ऑब्वियसली पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और उसमें भी विजुअल इंपेयरमेंट की जब हम बात करें तो उनके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, और वो लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए जो अर्चना जी ने बताया कि देयर आर 223 odd jobs which have been identified for people with disability, उसमें से roughly around 180 are suitable for persons with visual impairment. अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं? अब ये जो 183 डिफरेंट जॉब रोल्स है, उसमें बहुत सारे ऐसे जॉब रोल्स है जिसमें आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। कुछ जॉब रोल्स जो है वो मीनियल जॉब रोल्स है, एंटरप्रेन्योरशिप जॉब रोल्स है, पर ज्यादातर जो रोल्स है वो व्हाइट कॉलर जॉब्स है जिसके अंदर आपको असिस्टिव टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। अब ये जो जॉब रोल्स की बात है उसी को लेके हम थोड़ा सा आगे आपसे बात करने वाले, क्योंकि ये जो सेक्टर है बड़ा नीश सेक्टर है, अननोन सेक्टर है, इसके बारे में ज्यादातर
जो सोसाइटी है उसको आइडिया नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। सो जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम हमारा चेहरा दिखाने की बजाय हम एक स्क्रीन शेयर करेंगे जहां पे हम टेक्नोलॉजी किस तरह से इस्तेमाल की जाती है और जो विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं वो किस तरह से लिखते पढ़ते हैं उसके बारे में आपको पहले थोड़ा अंदाजा देने वाले हैं। सो हमारे साथ हमारे सहयोगी संजोग जो है वो पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं और वो उनका स्क्रीन शेयर करने वाले हैं अभी। संजोग, कैन यू शेयर योर स्क्रीन प्लीज? यस सर। Meeting control. Wireless display. Wireless display with speech mode off. Yes, is my screen visible? Yes. Homiyar sir. तो अब जो आप स्क्रीन देख रहे हो, आपके स्क्रीन के ऊपर संजोग का मोबाइल फोन आपको दिख रहा है। अब आप सोच रहे हम मोबाइल फोन क्यों दिखा रहे हैं? ये इसलिए दिखा रहे हैं कि संजोग जो खुद है वो भी एक ब्लाइंड व्यक्ति है। अब वो ब्लाइंड व्यक्ति टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके किस तरह से पढ़ाई करेगा वो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं। संजोग, कैन यू take them through your screen? Yes sir. So अभी जो आपके सामने स्क्रीन है ये एक साधारण ऑर्डिनरी एंड्रॉइड फोन की स्क्रीन है। दिस इज नॉर्मल एंड्रॉइड फोन। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दिस। कोई एक अलग से कोई डिवाइस नहीं बनाया गया है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं ये एक एंड्रॉइड 11 बेस्ड नोकिया 7.2 मोबाइल है जिसकी कीमत लगभग 15,000 रुपए है। अब इस एंड्रॉइड फोन के जरिए हम एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है डॉल्फिन इजी रीडर, इसके जरिए हम देखेंगे कि बच्चे किताबें कैसे पढ़ पाएंगे। अब ये आप देखिए, अभी यहाँ पे आपको एक आवाज सुनाई देगी। एप्स लिस्ट, इजी रीडर। ये जो आवाज है ये आवाज है टॉक बैक नाम के एक स्क्रीन रीडर की। ये स्क्रीन रीडर हर एंड्रॉइड मोबाइल में मौजूद है। ये स्क्रीन रीडर एक पार्ट है असिस्टिव टेक्नोलॉजी का और इसी स्क्रीन रीडर की मदद से हम पूरा मोबाइल ना सिर्फ एंटरटेनमेंट या सोशली कनेक्ट रहने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि हम पढ़ने के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। Social Science India and Contemporary World 2 Class 10 NCERT। तो यहाँ पे मैंने एक किताब खोल के रखी है। ये सोशल साइंस की किताब है, हिस्ट्री की किताब है टू बी स्पेसिफिक। NCERT CBSE बोर्ड की 10वीं कक्षा की ये किताब है, इंग्लिश मीडियम की। अब ये बच्चा एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा इमेजिन करिए, अपने मोबाइल में ये एप्लीकेशन खोलता है, बुक शेयर से ये किताब डाउनलोड करता है और अब देखेंगे हम ये कैसे पढ़ी जाती है। Play pause button। Chapter 1 The Rise of Nationalism in Europe। A QR code। Large numbers of people are crossing the desert in a single file holding flags of Germany and Hungary. The sky is full of angels looking down on them and in the center is Jesus, holding a cross. Fig. 1. The Dream of Worldwide Democratic and Social Republics, The Pact Between Nations, a print prepared by Frederick Soreau, 1848. In 1848, Frederick Soreau, a French artist, prepared a series of play pause। तो जो आपने अभी देखा कि संजोग ने अपने मोबाइल फोन के ऊपर एक टेक्स्ट बुक खोली और टेक्नोलॉजी के जरिए उसे पढ़ा। ये एक बहुत छोटा डेमोन्स्ट्रेशन था समय को ध्यान में रखते हुए, पर ये जरूर आपको अंदाजा आया होगा कि कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे हम अफोर्डेबल कहते हैं क्योंकि ज्यादा महंगी नहीं है, एक्सेसिबल है क्योंकि आपने देखा कि इससे दृष्टिबाधित व्यक्ति
पूरे एंड्रॉइड फोन को बड़ी आसानी से चला सकता है टॉकबैक के जरिए, जो एक स्क्रीन रीडर कहलाता है, और इजीली अवेलेबल है, क्योंकि ये एंड्रॉइड जो है हमारे देश में हर कोने में आपको कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। तो अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड अवेलेबल, ये 3 पिलर्स को हम ज्यादा ध्यान देते हैं। अब ये चीज को थोड़ा सा डीप में ले जाके अगर उसको समझने की कोशिश करें कि अगर हमारे ब्लाइंड बच्चे आज के समाज में, आज के युग में, जो टेक्नोलॉजी का युग है, उसमें अगर हम इनको टेक्नोलॉजी से स्कूल लेवल से ही जोड़ दें, उनको टेक्नोलॉजी के जरिए लिखना और पढ़ना दोनों सिखाते हैं। ये बहुत अहम है कि हम सिर्फ पढ़ने की बात ना करें, लिखना भी सिखाएं, क्योंकि अल्टीमेटली जब अर्चना जी स्किल डेवलपमेंट की बात कर रही है और उनमें से जॉब्स देने की बात करेगी, तो ब्लाइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो खुद लिखे। अगर वो सिर्फ स्क्राइब के भरोसे, राइटर के भरोसे ही लिखना सीखेंगे तो वो एम्प्लॉयबल नहीं बन सकते, क्योंकि कोई भी नौकरी ऐसी नहीं मिलेगी जहां सिर्फ ब्लाइंड को रखा गया और किसी और आदमी को भी लगाना पड़े जो उसके लिए लिखाई करे, वो संभव ही नहीं है। इसीलिए ब्लाइंड बच्चे को एज अ स्टूडेंट वहीं से अगर वो टेक्नोलॉजी के जरिए लिखना और पढ़ना दोनों साथ में करे, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके खुद अपने एग्जामिनेशन लिखे, वहां से शुरुआत करके बच्चा जब उससे भी छोटा है तो टेक्नोलॉजी से ही ABC सीखे, ना कि सिर्फ ब्रेल से सीखे, क्योंकि ब्रेल एक बहुत ही सीमित माध्यम है। कुछ लोगों को यह सुन के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि ब्लाइंड और उसको ब्रेल ना सिखाए, जरूरी नहीं है। आज विकल्प हमारे पास बहुत सारे और भी है जिसके माध्यम से हम बच्चे को एक इंक्लूसिव स्कूल में दाखला दिलवा सकते हैं। अगर सिर्फ बच्चा ब्रेल सीखा और उसको इंक्लूसिव स्कूल के अंदर हम दाखला देते हैं, तो जो वहां की जो टीचर है, मेन स्ट्रीम स्कूल की टीचर है, जिसे ब्रेल नहीं आता है, वो ये बच्चे को समावेश नहीं कर सकते हैं। इसीलिए टेक्नोलॉजी, और जैसे कि आपने अभी देखा एंड्रॉइड फोन जैसे एक सिंपल टेक्नोलॉजी, जो साइटेड टीचर है वो स्क्रीन पे देख सकेगी, जो ब्लाइंड बच्चा संजोग जैसा है वो अपने टॉकबैक के जरिए जो भी लिखाई है वो सुन सकेगा। तो ये ऐसी इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में लाके ब्लाइंड को अगर हम पहले से तैयार करते हैं तो उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे चल के हमें रीस्किलिंग की जरूरत बहुत कम हो जाएगी। और जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सेक्टर में, ब्लाइंड सेक्टर में है, अनएम्प्लॉयमेंट, उसका कुछ हद तक निवारण हो सकता है। बैक टू यू सुनीता जी। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर होमियार जी, कि बिना स्क्राइब, बिना सीखे, बिना लिखे, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज किसी भी कैटेगरी में हो, सीखना बहुत जरूरी है। उनको ब्रेल के साथ सीखें और बहुत अर्ली इंटरवेंशन, शुरुआत से ही उनकी ये होनी, शुरुआत ही जीवन में ही ये इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए कि हर एक टेक्नोलॉजी गैजेट्स के साथ वो फ्रेंडली हो और उसका सही इस्तेमाल हो। कमिंग बैक टू यू डॉक्टर होमियार जी, जो मेरा एक क्वेश्चन है अबाउट योर प्लेटफॉर्म, ये जो ई डिजिटल आपका जो प्लेटफॉर्म है बुक शेयर, ये कैसे, क्या इसके साथ कौन जुड़ सकता है? क्या एक रेगुलर स्कूल टीचर दूर दराज गांव में जो है, रूरल एरिया इंडिया में है, कैन शी ऑल्सो जॉइन दिस प्लेटफॉर्म? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनीता जी। बुक शेयर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, ऑनलाइन लाइब्रेरी है, जहां पे 13 लाख से भी ज्यादा एक्सेसिबल टाइटल्स अवेलेबल है। बुकशेयर जो है बेनेटेक नाम का एक इंटरनेशनल एनजीओ है, उसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है। बेनेटेक इज ए यूएस बेस्ड इंटरनेशनल एनजीओ। बुकशेयर की जो सेवाएं हैं 95 से ज्यादा कंट्रीज में ये हम सपोर्ट करते हैं। 8 लाख से ज्यादा प्रिंट डिसेबल्ड व्यक्ति इसके मेंबर्स हैं। ये शब्द पे थोड़ा गौर करेंगे, प्रिंट डिसेबल्ड। प्रिंट डिसेबल का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति स्टैंडर्ड प्रिंटेड टेक्स्ट को नहीं पढ़ सकता है या हैंडल नहीं कर सकता, वो प्रिंट डिसेबल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लाइंड है, लो विजन है, डिसलेक्सिया वाले जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले इंडिविजुअल्स है, या फिर सेरेब्रल पॉल्सी जैसे किसी इंसान को है जो जिसके हाथ में डेक्सटेरिटी इश्यूज है,
किताब को पकड़ नहीं सकते हैं, हाथ में पैरालिसिस है या कोई डिफॉर्मिटी है जिसकी वजह से वो बुक को पेज टर्न नहीं कर सकते, ये सारे प्रिंट डिसेबल कहलाते हैं। और दुनिया की 10% पॉपुलेशन प्रिंट डिसेबल कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारे लोग बुकशेयर के मेंबर बन सकते हैं। बुकशेयर का मेंबरशिप डेवलपिंग कंट्रीज में कंप्लीटली फ्री है, तो इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया में बुकशेयर की मेंबरशिप फ्री है। और आपने जो पूछा क्या दूर दराज के टीचर बन सकते हैं, बन सकते हैं इसके मेंबर, पर उसके लिए एक शर्त है कि वो ब्लाइंड या प्रिंट डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए बुकशेयर की सामग्री का इस्तेमाल करे तो उनको मेंबरशिप मिल सकती है। सामान्य जो इंडिविजुअल है जिनकी विजन में कोई कमी नहीं है या वो प्रिंट डिसेबल नहीं है, वो बुकशेयर के डायरेक्ट मेंबर्स नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हम जो पब्लिशर्स के साथ एग्रीमेंट करते हैं, जो प्रकाशक है उनके साथ जो एग्रीमेंट करते हैं, जो हमें ये किताबें देते हैं बुकशेयर पे, जो 13 लाख से ज्यादा किताबें हैं, उनके साथ यही एग्रीमेंट है कि ये लाइब्रेरी सिर्फ जो इजीली पढ़ नहीं सकते हैं, जिनको रीडिंग बैरियर है, उनके लिए हम ये बुक्स प्रोवाइड करेंगे। वरना तो कॉपीराइट लॉज की जो बात है वो बीच में आ जाती है, पायरेसी होने के चांसेस है। इसलिए बुकशेयर इज अ क्लोज प्लेटफॉर्म बट इट इज अ फ्री प्लेटफॉर्म। बुकशेयर मेंबरशिप के लिए आपको सिर्फ हमें कांटेक्ट करना होता है हमारी हेल्पलाइन के जरिए। Helpline numbers can be put on the screen. Sanjog can just type it in the chat and the organizers can put it out on YouTube and Facebook also. People can contact us anytime and become members of Bookshare. You just need to have a Bookshare, a medical certificate proving your print disability. Thank you. Thank you for this information, Dr. Homiyar. My second question to you is, like as you said, it is, anyone can partner on this platform. So who can partner? New partners can join in, or is it has to be organizations? It can be schools, or any specific specifications required for it? There are two types of people who can join Bookshare or partner with Bookshare. One is the user side. तो यूजर में इंडिविजुअल्स भी बुकशेयर के मेंबर बन सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशंस who are helping or working with people with print disability, जैसे ब्लाइंड स्कूल है, या डिसलेक्सिया बेस्ड एसोसिएशंस है, या स्पैस्टिक सोसाइटी जैसे एसोसिएशंस है, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन तौर पे भी बुकशेयर की मेंबरशिप लेके उनके मेंबर्स को ये बुकशेयर के टाइटल्स दे सकते हैं। दिस इज वन साइड ऑफ द गेम। जो दूसरी साइड है, जो प्रोवाइडर है, एनी ऑर्गेनाइजेशन हु इज अ पब्लिशर ऑफ कंटेंट, जैसे औरोबिंदो सोसाइटी, अगर आपका जो कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हैं वो कंटेंट एक्सेसिबल फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में, हम ब्रेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑडियो की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिजिटल फॉर्मेट, डिजिटल ई टेक्स्ट जो आपको संजोग ने दिखाया, उस फॉर्मेट में अगर आप बुकशेयर पे शेयर करना चाहते हैं तो वो आप एज अ पब्लिशर पार्टनर हमसे जुड़ सकते हैं और आपका कंटेंट जो है बुकशेयर पे होस्ट कर सकते हैं, जिससे कोई भी बंदा जो बुकशेयर का मेंबर है कहीं से भी ग्लोबली वो आपका कंटेंट डाउनलोड करके अपने मोबाइल डिवाइस पे, अपने लैपटॉप पे, अपने रिफ्रेशेबल ब्रेल डिवाइस पे, अपने स्मार्टफोन पे, कहीं से भी वो एक्सेस करके उसको पढ़ सकता है। सेम गोज टू जैसे NSDC की जो PDF डॉक्यूमेंट्स की बात अर्चना जी ने की, वो डॉक्यूमेंट्स भी अगर एक्सेसिबल फॉर्मेट में है, PDF एक्सेसिबल है, इफ दे cater to accessibility guidelines, these can also be put on Bookshare and people can look at these documents, study them, be prepared with them before appearing for whatever jobs or however it has to be done. Does that answer your question, Sunita ji? Absolutely, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से आपने बहुत ही सरल तरीके से ये हमारे सारे व्यूअर्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल जो जुड़े हुए हैं आज के लाइव वेबिनार में, उनको आपने बहुत ही सरल तरीके से जानकारी दी है। और आई एम extremely grateful and thank you, Dr. Homiyar, for joining us live today on the accessibility webinar. आपने बहुत ही एक इस इनोवेटिव और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दी। We are extremely privileged to have you with us today. और
एंड आई एम श्योर कि जो आपने इतनी इंफॉर्मेटिव और आवश्यक जानकारी दी है कि कैसे पीपल विद डिसेबिलिटीज, चाहे वो विजुअल इम्पेयर्ड हो, चाहे वो सेरेब्रल पॉल्सी को हो, चाहे वो डिसलेक्सिक हो, कैसे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और इतनी वास्ट ई बुक्स की सेवाएं वो ले सकते हैं। सो मैं सभी जो मेरे साथी जुड़े हैं सभी से कहूंगी कि इस प्लेटफॉर्म को वो जरूर देखें, एक्सेस करें और इसके बारे में जानकारी और आगे लोगों के साथ शेयर करें। Now moving on to our last segment, which is on accessibility, covering inclusion. May I invite Dr. Simmi Mahajan ji, who is Project Head Inclusion, Sri Aurobindo Society, and who has been contributing tirelessly in the field of health and education, mental health screening and counseling for the last 30 years. Over to you, Simmi ji. Namaskar, Sunita ji, and a very good morning to all my co-panelists and the viewers. And it's amazing I was listening to all the panelists, and it's really good to know that about their amazing work they have been doing. And I'm happy to be part of this work. Speaking about Project Inclusion is Sri Aurobindo Society's initiative, started in 2016 with the vision of transforming education in India and with the vision of transforming education for children with hidden disabilities. So this project was specifically focusing on identifying students who have not been performing well in the classroom because of various learning difficulties, and making teachers capable, unable to understand their difficulties, and making them capable of providing right interventions so that these children are very well included into the system. So in 2016 till 2020, before the COVID, the project spread its wing in 14 states and union territories and 17 districts of the country. And with we wanted to understand what is the status of inclusive education in the country, and the most important stakeholder, who's a mainstream teacher, how much he is ready to bring inclusion in the classroom. Because when we are talking about inclusive education, then definitely all the stakeholders are important and needs to come on the same platform. So we're working and we could train around 20,000 teachers, more than 20,000 teachers into understanding neurodevelopmental disorders like specific learning disabilities, autism, ADHD, intellectual disabilities. And through the training program, we could identify with the help of teachers, around 18,000 students were screened also for the neurodevelopmental, and because of the paucity of time and the resources, we could do the assessment of around 6,000 students. And so there was the common data study which came across was that in all the districts, like we worked from Sikkim to Pondicherry, Sikkim, Jharkhand, Chhattisgarh, Bihar, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Dadra Nagar Haveli, Tripura, Daman Diu, and Andaman Nicobar, Tamil Nadu, Pondicherry. So we found that the common factor was that teachers in the classroom were not very well prepared about inclusive education. What is inclusive education, and what are these? How they can actually segregate students with various learning needs and difficulties. In spite of the common symptom, the common problem which appears in the child is that he's not performing well in the classroom. So they are only given a common box is that they are slow learner and they are that is there. So rather than understanding each and every child's learning need, because a lot of scope can be done as per if we understand their learning needs. So this was a common thing. And second was that
Teachers were, when they trained, they actually gave a very good response. So it's not like that they don't want to be trained. They need a right specific training so that they can do actually do lot of work with these children in the classroom. And the purpose was just that if we really have to bring to the last mile, that is the employability. Once we identify a child, and we have to nurture that child into the system in the early education and everything, and ultimately that goal is that child should be very well employed in the system. So a lot of people are working in different directions. So the purpose was that let us complete the chain. If the chain is broken at any end, so whatever work anybody is doing, it is not actually accessible and it has no relevance. So that is the vision of project inclusion, that the first step is that let us make the community, parents, teachers, other stakeholders capable of identifying these different needs of children and be sensitive towards them, and let us provide the right education to them, and let us nurture them into the system. And second part is that we should not lose hope on these children. They are very very much capable, and the people like organization like Bookshare, skill development, as Archana ji shared, that if everybody is working in the same goal, towards same goal and in the same direction, if we all are connected, very well connected together, I'm sure that very soon our word will be actually the inclusive word. This is what the dream of all the education people. So after 2020, now 2022, when we saw that project inclusion was that this is the scenario, so our mission was to let make this education accessible to all the teachers of the country. So the only solution we could find out is that technology, because technology is something nowadays which can provide lot of solution to the issues like scalability. If we have to train all the teachers, so we digitalize the whole program, and now our mission is to cover all the parts of the country, reach to all the teachers of the country, and through the basic course we have developed, which is given to the teachers through the learning management system. The course is for special educators also. The course is for teachers also, which is talking about what is disability, what are the what is there in PWD Act and RPWD Act 2016, and the various learning difficulties like as I told you, that SLD, autism, intellectual disability, and with that also slow underachievers, gifted children, because ultimately they present with this common thing is that they are not performing well in the class, but with the different needs. And then we are trained the course during the program. The teachers are given the screening tool also, so that which helps them to screen the child immediately. And there is a online intervention program for the teachers which guides them, if the child already in the classroom, what are the things they can do, and they can apply in the classroom, so that the child is very well included into the system. And then the role of special educator actually becomes more meaningful. They get a right support from the teacher and the other stakeholders, and ultimately that support is given to the child. So, and the second purpose of project inclusion is that organization जो हम बात कर रहे हैं, Homiyar ji is doing amazing work. When I met him in one of the conferences, and so many people are doing amazing work, and all such people needs to be together, and this kind of information also be accessible to every child, every parent, and every teacher in the country, so that they can actually use the right thing. So this is what project inclusion is doing, and I hope that we'll be able to reach to all the teachers. And the course is actually we are bringing the course in different languages also. Currently the courses, this program is available in 7 languages,
and we want to increase more and more languages so that there should not be any barrier because of the language issue. Thank you. Dr. Simmi ji, thank you for the insight. It is your brainchild and your vision. The project inclusion is all about you and your vision and how it has to expand further. But my question is today is on accessibility. कि accessibility in inclusive education क्या है? क्योंकि कुछ हमारे जो टीचर्स जुड़े हैं वो थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि accessibility inclusive education में किस हद तक मददगार रही है. और यहाँ मैं टेक्नोलॉजी की बात करूंगी. एक्सेसिबिलिटी टेक्नोलॉजी डिजिटल मोड के द्वारा कैसे ये इतने दूर दराज गांव तक पहुंच पाई है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? बहुत अच्छा सुनीता जी आपने पूछा कि एक्सेसिबिलिटी. सो एक्सेसिबिलिटी जो अभी भी हमारे जो को पैनल में सभी ने बात करी कि एक्सेसिबिलिटी इज नॉट जस्ट मेकिंग हम रैम्प्स बना देते हैं तो सिर्फ एक्सेसिबिलिटी है. इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी इज अलग, एम्प्लॉयमेंट एक्सेसिबिलिटी इज अलग. अल्टीमेटली सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी है इंफॉर्मेशन, कि क्या वो इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है लोगों तक के नहीं है. एंड जैसे मैंने बोला कि डिजिटल सॉल्यूशन, बिकॉज एक्सेसिबिलिटी के साथ साथ इनोवेशन बहुत जरूरी है आज इस फील्ड में. आज हम एडटेक की बात कर रहे हैं, innovation in education, edtech technology in education, जहाँ पे when we talk about children with disabilities or CWSN, so यहाँ पे भी बहुत जरूरत है कि डिजिटल सॉल्यूशंस की. जैसे हमने बोला कि जो हमारा प्रोग्राम है जब आया कि शायद ट्रेनिंग तो पहले भी हो रही थी, टीचर्स की भी हो रही थी, कम्युनिटीज की भी हो रही थी, लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं था, ज्यादा चेंज नहीं आ रहा था. बिकॉज जब तक मास लेवल पे इकट्ठा नहीं किया जाएगा तो वो क्रिएट नहीं हो सकता. तो जहाँ पे we came out with the digital solution कि let us make the program more digital and accessible to everyone. That education needs to be given to, why few teachers are given that whenever we talk about the training program, because with physical trainings have lot of logistic cost. Because of that, state also have certain budget, and then they are not able to train all the teachers in this field. So then we said, okay, let us make this, at least this information, the course accessible to all the teachers. So we digitalize the course, we are giving through the app. And second was that let us identify those students. Once they are identified, they should be accessible, that data should be accessible to all the departments. So there should be proper documentation anywhere, and it has to be the records should be digitalized. Because second thing is that when we talk about PWD, people with disability, it is not only the one department's responsibility, especially in education also. Education system, Ministry of Social Justice and Empowerment, and then the mother and child and healthcare. And we found that right now there is no connection also. So we are doing, all people are doing same thing, repetition of the work is done. So there is no interconnectivity and integration. So where the digital solution is the one that once, wherever the child is first recognized and done, the data needs to be transferred to the other people and other departments. So there is the role of, so the information needs to be accessible to everyone who requires that. So this is what Project Inclusion thinks, that we are working in those lines, working with the state government education department. And so we are working on all these issues so that let us make the world more accessible and the community more inclusive in terms of inclusion. Thank you. I hope I'm able to satisfy your answer. Absolutely, Simmi ji. बहुत ही डिटेल में आपने हमारे जितने जो जुड़े हुए हैं टीचर्स, प्रोफेशनल्स, पेरेंट्स, उनको आपने बहुत ही सरल तरीके से बताया अबाउट प्रोजेक्ट इंक्लूजन. और ये जो टेक्नोलॉजी की मदद से, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, टीचर्स आर गेटिंग ट्रेन्ड, teachers are getting, an opportunity to identify children with hidden difficulties in a regular classroom. तो ये सारी सुविधाएं उनको इतनी दूर आप डिजिटल
टेक्नोलॉजी के थ्रू दे रही हैं, दैट इज एक्सेसिबिलिटी इन स्पेशल इन इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इन एजुकेशन इन जनरल. थैंक यू सो मच. यस सिमी जी, आप मैं सुनीता जी मैं ये भी शेयर करना चाहूंगी, दिस टाइम वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे का जो थीम है वो है ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, the role of innovation in fueling an accessible and equitable world. So this is so good that I think the whole world is aligned with the same thought. Yeah, absolutely, I agree with you, and we are in tune with the topic, the theme of the International Day for the Disability 2022. Thank you very much, Simmi ji, for joining us and for giving your valuable input and sharing your experiences with our audience today. So now to conclude, we will share a video with all our viewers. Now we will share a video with our viewers on project inclusion. Project inclusion, as Simmi ji said, is all about technology, connecting teachers, the teacher community from Delhi to distant part of India in various states, in the 14 states that we are conducting the program now. Can we have the video, please? So now we conclude today's session and the webinar. Please like on our YouTube channel, download the app for detailed information, and connect with us in all social media platforms. The link is given in the comment section. Please share the information, like the information, and download the app. So let us conclude today's live webinar event. And I am grateful for all the panelists who have joined today, all the viewers, the teachers, the parents community who have joined us for this live session. And I hope that this webinar theme, accessibility, a generation for change, has really, at least to some extent, helped in understanding the environment the persons with disabilities are creating, and the effort put in by all the NGOs, the professionals in changing the life of the people of disabilities in India and throughout the world. I again thank the panelists for sharing the insight and the experience in this theme, the topic that we covered today.
And as per our, the National Education Policy 2020 and Rights for Persons with Disabilities 2016, a greater impetus and emphasis is laid on accessibility. And we have tried to cover just, 4 domains in accessibility. That was infrastructure, employability, assistive technology, and education, inclusive education. So we will try to cover more in our next webinars. But for today, we can always say that we as a country have come a long way in the field of disability, in the empowerment of persons with disabilities, but more still has to be done and still has to come. Thank you very much. Thanking you all for joining us. And please do like and share all our social media platforms, download the app and share as much as possible. The link is given below in the comment section. Thank you very much. Namaskar.